ओके, ठीक है बेटा। तो today we will start from that point where we previously left. So we previously discussed conductors and non-conductors. Today we will discuss okay, some solutions are also conductors and non-conductors. So there are various things when we add those into the water, current can pass, and there are also those things through which current cannot pass. The solutions through which current can pass is known as electrolytic solution. क्या कहते हैं? Electrolytic solution. Open your books, page number है page number 165. Okay. So अब यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर में जो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, these all are regarding with the conduction through the solutions. ठीक है, तो जनरली हमने वो पढ़े हैं कि कुछ कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, जैसे मेटल्स हैं कंडक्टर्स हैं, प्लास्टिक इज नॉन कंडक्टर। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे कुछ लिक्विड्स भी हैं जिनमें से हम करंट पास कर सकते हैं, या कुछ ऐसे लिक्विड्स भी हैं जिनमें से करंट पास नहीं कर सकते। अब अगर हम शुरू करें फ्रॉम वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट कैन नॉट पास। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर सुना है? अगर नहीं सुना तो रेज करें बेटा। जी, अगर डिस्टिल्ड वाटर आप लोगों ने नहीं सुना तो रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। एवरीबॉडी नो? ये तासीन अभी उठना शुरू हो गया, सब हो गया है। ओके तासीन, यस तासीन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। जी, तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं सुना? नो सर। नो। ये तो डिस्टिल्ड वाटर मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर किस तरह होता है, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर। इसमें क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। एक मिनट में पिक्चर इसकी शो करूं तो उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। ओके, जब बेटा अब ये कुछ तस्वीरें मैंने रखी है और अदरवाइज लोड हो या यहीं से देख लें। जब बेटा आप देखें, एक ये हमारे पास फ्लास्क है, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहाँ पे एक थर्मोमीटर फिट है और यहाँ पे एक कंडेंसर आ जाता है। कंडेंसर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही स्क्रीन। हेलो नो सर।
अभी आ रहा है? जी बेटा। अमीन कौन था? अमीन। सर क्लियर वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस का नहीं कह रहा मैं, इसका बता रहा। पिक्चर आ रही ना? तासीन। सर बिल्कुल क्लियर ही नहीं, सर बिल्कुल क्लियर ही नहीं आ रही। क्लियर नजर नहीं आ रही? थोड़ा सा लग रहा है कि है कुछ? नो सर। कुछ नहीं लग रहा। एक मिनट पापा। पापा रणवीर सर का वॉइस आ जी रही है सर लेकिन क्लियर, सर कुछ क्लियर समझ चाहिए में ही सर। नहीं आ रहा। क्लियर भी हो सकता है। तासीन आपकी नेट का मतलब पापा का कह नहीं आ रहा है। आ रहा है नहीं? पापा। ये सर क्लियर चाहिए सर। हाँ नहीं बचे थे ओके। क्लियर। तासीन आपको नहीं आ नजर? तासीन पता नहीं नो कंफ्यूज है। सर बस आप कंफ्यूज है या कुछ है ऐसा, पता नहीं क्या मसला है। तासीन चाय मैंने पीती स्क्रीनशॉट है। मोकला ना सर। सर चले मैं इस पिक्चर को भेज दूंगा सर अभी। हाँ ने क्लियर दिया जो बस। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा बेटा आप देखें यहाँ पे, ये एक फ्लास्क है जिसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, यहाँ पे एक थर्मोमीटर है और यहाँ पे स्टॉपर इसका जो ऊपर लगाया हुआ है। नीचे बर्नर है जिससे फ्लेम जलाएंगे, आग लगेगी। ओके। अच्छा, अब इसमें सी वाटर रखा हुआ है, समंदर का पानी है, दैट विल कंटेन सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम वहाँ पे एक और चीज़ है, दिस इज नोन एज कंडेंसर। ठीक है, अब इसमें देखें कि यहाँ से इसकी ओपनिंग है और थ्रू आउट होल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही ट्यूब है, और आउटसाइड इसकी एक और ट्यूब बनी हुई है। ठीक है, और इस तरफ रखिए एक फ्लास्क। अब होगा क्या यहाँ पे कि वाटर को यहाँ से कर दिया जाएगा हीट। अब हीट की वजह से क्या होगा, वाटर के वेपर्स उठेंगे एंड दे हैव ओनली वन ओपनिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से इस तरफ मूव करना वेपर्स शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली ट्यूब है इसमें वाटर इन किया जाता है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब स्टीम यहाँ पे आएगी, वाटर के वेपर्स यहाँ पे आएंगे, तो ये ऊपर वाली जो ट्यूब है, क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे, दैट विल कूल डाउन दिस इनर ट्यूब। ठीक है, ऊपर वाले ट्यूब में जो पानी है वो इस इनर ट्यूब को ठंडा करेगा। अब जैसे ही ये जो स्टीम है इसकी वॉल के साथ टच होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर। ठीक है, अब इसकी वजह से जो पानी हमें यहाँ पे जमा होते हुए नजर आएगा, इसको कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो जो सॉल्ट है यहीं पे रह जाएगा, वाटर के वेपर्स बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो दिस वाटर इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। अब इस डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू करंट पास नहीं होता। ठीक है, तो पहली जो चीज जिसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर। जी मुसव्विर, मुसव्विर अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। जी, रेज हैंड किया था आपने। ये सर जो जो सर डिस्टिल वाटर होता है वो बैटरीज वगैरह में यूज होती है ना, जो कार की बैटरी होती है। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे यूज होता है। ओके, ठीक है बेटा, तो अब डिस्टिल्ड वाटर इज अ गुड कंडक्ट, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द करंट, इसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो दोबारा हम पेज की तरफ आ रहे हैं। सो पहली चीज, फ्रॉम द लिक्विड्स डिस्टिल्ड वाटर इज नॉन कंडक्टर। लेकिन जब आप लोगों ने देखा होगा कि हम नहा के आते हैं तो बड़े मना करते हैं कि भाई जब आप नहा के आए हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ ना लगाएं। तो उसकी वजह ये होती है कि जब हमारे बॉडी गीली होती है तो दैट आउटर सरफेस कंटेन वाटर एंड दैट इज नॉट प्योर वाटर। तो प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर, तो इस वजह से उसी पानी की वजह से हमें शॉक लग सकता है। ठीक है,
तो इसी वजह से जो हमारा नॉर्मल टेप वाटर है दैट इज अ गुड कंडक्टर, जबकि डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर। अच्छा, इसी तरह जैसे यहाँ पे दिया है कि इफ वी एड सॉल्ट इन वाटर, इफ वी एड एसिड इन वाटर, और इफ वी एड बेस इन वाटर, सो दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, इनमें से कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये एक एक्टिविटी है जो कि मैंने क्लासेस में भी करवाई थी, लेकिन एक बार तब फिर मैं यहाँ पे वीडियो मैंने रखी थी इसके लिए, तो उसकी तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन दिस वीडियो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले वो एक बल्ब था छोटा सा, उसको उसमें से करंट पास करने की कोशिश करा था वाटर के थ्रू, लेकिन वो करंट पास नहीं हो रहा था। ठीक है, जब उसने उसी पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया तो उसकी वजह से वो जो बल्ब है ग्लो करना शुरू कर दिया। तो सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द करंट। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है वो भी इसी हवाले से है। अब ये एक टेप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, केरोसिन, डिस्टिल्ड वाटर, अब ये सारी चीज़ें तो हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ें थी जिसकी वीडियो मेरे ख्याल में निकाली थी। ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। Electrolysis is electrical current flow through a liquid which causes chemical changes. Yes, you did hear that correctly. Current flowing through a liquid. Now, not all liquids can conduct. The liquid can be a molten ionic compound or an aqueous solution. In either case, it must be able to carry current. Let's take a common example, table salt. If you heat sodium chloride to over 801 degrees Celsius, it will melt. The liquid will contain free-flowing positive sodium ions and negative chloride ions. This simply means that sodium and chloride ions are free to move within the liquid sodium chloride. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions.
Now consider putting two electrical conductors into the liquid. Copper would be good as it has a higher melting point. Nothing happens to the ions at this point, but if we connect the two bits of copper to an electrical cell or power supply, then things start to get interesting. We do need to sidestep for a moment to look at electrical current in a metal. From our lesson Behaviour of Metallic Structures, we know that electrons in a metal aren't bound to particular atoms. They form a sea of electrons that can move easily if a potential difference or a voltage is applied across it. This could be from an electrical cell or a battery. The electrons will begin to drift towards the positive terminal of the battery, and this is what happens when current flows. Current is the movement of charge, in this case, electrons. Now, let's go back to our molten sodium chloride. We've added our copper wires, let's call them electrodes, and now we'll connect these to an electrical cell. The electrons will start to flow in the wires, and this will cause one electrode to become positively charged and the other negatively charged. This has an immediate knock-on effect in the molten sodium chloride, which you'll remember is a mixture of sodium cations and chloride anions. Anything positively charged in the liquid, in this case the sodium ions, is going to be attracted to the negative electrode. And anything negatively charged, in this case the chloride ions, is going to be attracted to the positive electrode. This is because opposite electrical charges attract. When the ions meet the electrodes, electron exchange happens, and this triggers a chemical reaction. Solids can form, gases can be given off, and new solutions can be left behind. It all depends on the liquid and what material the electrodes are made from. There is more detail about this process in our lesson Interpreting Electrode Equations. There are special names for the electrodes, which are usually metal plates with a larger surface area than a piece of wire. The positive electrode is called the anode, it attracts anions, and the negative electrode is called the cathode, it attracts cations. The liquid is effectively conducting electrical current. The only difference is that the charge carriers in the liquid, in other words the charged particles that are moving, are ions. If a liquid has free moving ions and can conduct like this, it is called an electrolyte. Remember that electrolysis can also take place in ionic solutions as well as molten compounds. The more concentrated that solution, the greater the ion flow rate. Ion flow rate can also be increased by increasing the potential difference or voltage across the cell. We'll be studying several examples of electrolysis in more detail in other lessons. For the time being though, here is a summary of the key ideas about electrolysis. Electrolysis is the flow of electrical current in a conducting solution or molten liquid that causes chemical changes. The conducting liquid is called an electrolyte and has free moving ions. The conducting plates, bars or wires inserted into an electrolyte are called electrodes. Positive ions are called cations and are attracted to the cathode. Negative ions are called anions and are attracted to the anode. When current flows in an electrolyte, it is the ions that move and carry the electrical charge. When current flows in the electrodes and wires, it is the electrons that move and carry the electrical charge. ओके तो अब इस वीडियो में जो प्रोसेस शो किया गया दैट वाज द इलेक्ट्रोलाइसिस. ये जो सारा काम कर रहे थे कंडक्शन थ्रू द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिकम्पोजिंग या डिस्ट्रॉइंग द मटेरियल्स. इसमें क्या होता है, वो जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, दिस इज अ केमिकल चेंज. अच्छा, अब यहाँ पे बेटा कुछ इस तरह की चीजें दी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या है. These are the liquids which conducts electricity and undergoes decomposition is called electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लिक्विड है, जब उसमें से हम करंट पास करेंगे तो उसके दौरान वो जो मटेरियल है दैट विल बी डिकम्पोज्ड
टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को मींस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन द सब्सटेंसेस थ्रू करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं that is known as electrolysis. Electro means electricity and lysis means breakdown. तो अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वो जो सॉल्यूशन हम लेते हैं जैसे सॉल्ट वाटर था, तो सॉल्ट इज NaCl सोडियम क्लोराइड। तो जब उसमें से करंट हम पास करते हैं तो क्या होगा, सोडियम विल बी सेपरेटेड एंड क्लोरीन विल बी सेपरेटेड। तो सोडियम और क्लोरीन उसमें से ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगे। इस वजह से इस प्रोसेस होल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैटरी के जो टर्मिनल हम यूज करते हैं, ये दीज आर सिंपल टर्म्स। अगर वो हमारे पास पॉजिटिव है दैट इज नोन एज एनोड, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। अच्छा, अब द apparatus used for electrolysis is called voltmeter। एक एक तो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसके थ्रू हम वोल्टेज फाइंड करते हैं। जो घरों में हमारे पास मेन सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पे देखा होगा आप लोगों ने कि दैट कंटेन अ मीटर विच विल शो कि कितनी बिजली आ रही है, ठीक है। नॉर्मली 220 हमारे अप्लायंसेस चलते हैं 220 वोल्टेज पे, ज्यादा से ज्यादा 240 तक चली जाए तो भी ठीक है, ठीक है। उससे अगर ज्यादा होगी या कम होगी तो दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो बहरहाल अब वो वोल्ट मीटर अलग होता है। यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम हम बना रहे थे, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर ये दी गई इसी पेज के ऊपर, तो दिस होल पिक्चर या दिस होल एक्सपेरिमेंट इज नोन एज वोल्टामीटर। वोल्टा इस वजह से क्योंकि इसको जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था दैट वाज द वोल्टा साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज नोन एज वोल्टामीटर। अच्छा, एक और कुछ और चीजें इन्होंने यहाँ पे दी हैं कि जैसे लेड है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो दीज आर दी इलेक्ट्रिक बल्ब, वो जो छोटे बल्ब होते हैं ना, जैसे यहाँ पे पिक्चर दी गई है, तो दीज आर नोन एज लेड, LEG मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसके थ्रू हम जब करंट पास करते हैं दे स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। तो इसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर करंट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन और नॉट। अच्छा बेटा, अब उसके बाद आगे एक्टिविटी है इसमें कि यूज अ कंपास नीडल टू मेक अ टेस्ट, ठीक है। वो भी मैंने यहाँ पे पिक्चर उसकी एक्चुअली वीडियो निकाली है। और एट द सेम टाइम ये जो दूसरी है कि केमिकल चेंजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट पास करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में से तो उसमें एक्चुअली केमिकल चेंजेस आती हैं। जी अब्दुल वाहिद has raised hand. Yes, beta. Unmute yourself. जी अब्दुल वाहिद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, करिए। ओके, ठीक है बेटा। अब इन दोनों वीडियोस की तरफ जा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है देखें, ठीक है। Is electricity and magnetism are related? Let's try to understand this with an activity. Here, we have taken a cardboard tray. It is wrapped with an electric wire. A small compass needle is placed inside it. The free ends of this wire are connected to an electric cell through a switch as shown. Note the direction in which the compass needle is pointing. Now, switch on the circuit with a plug key and observe the compass needle. We can see that the compass needle deflects. Now, unplug the key and observe. We can see that the compass needle come back to its initial position. Repeat the experiment few times. We know that compass is a tiny magnet which is affected by any magnetic field around it. In this activity, we have seen that the compass needle gets deflected
when the current flows nearby. This means that there is some magnetic field created around the compass when current is passing through. So, when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. Thus, we find that electricity and magnetism are related. Wahid, I am coming to you. Wait for a while. ठीक है, आप क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ, बस एक जल्दी से मैं वीडियो दिखा दूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जब करंट पास किया जा रहा है थ्रू पोटैटो, पोटैटो इज आल्सो सॉल्यूशन एंड इट इज अ गुड कंडक्टर लाइक ए सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो जैसे ही करंट पास किया तो उसकी वजह से बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही फिर उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया तो उसकी वजह से वहां पे स्पॉट्स अपीयर हो गए थे। ठीक है, तो दैट दो स्पॉट्स शोज के दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल चेंजेस आ रही है, तभी उसके अंदर स्पॉट्स शो हो रहे हैं। जी अब्दुल वाहिद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट योरसेल्फ।
अब्दुल वाहिद, ओके। अरूबा, अनम्यूट योरसेल्फ। अरूबा, अरूबा, जी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी बेटा, आप बताएं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? जी अरूबा। ओके चले बेटा, आपका इतना क्लियर आवाज नहीं आया। आमना, अनम्यूट योरसेल्फ। आमना।